Hi everyone. Hello. Audible? Okay. Mom, one thing I can't. Hi, mom. Good evening. Good evening, everyone. We will start within 5 to 10 minutes. Within 5 minutes, I believe. Hello, everyone. Thank you so much for joining today. Ma'am, can you please add the speaker? Good evening, ma'am. How are you? I'm absolutely fine, Urvashi. You've made my day by inviting me on this very Ma'am, special night because I'll be talking to so many of your audiences and बहुत बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं. So I'm very very honored to be here. Thank you so much, ma'am. It's our pleasure that you are here. It's like a dream come true to talking to you because you're such a big influence you have left in the world, and it's so great to see you. Hi, I'm humbled. Nayanshi. Hi, Harsh Vitori. Hi, everyone. So, ma'am, shall I begin? Absolutely. Okay. Work for a cause, not for applause. I would like to commence with today's event. A very warm evening to everybody. Moving further, I would like to thank you who have joined us today to support our organization. This event is organized by Aashman Foundation, which works for the betterment and upliftment of poor and downtrodden widows and families by providing education to their children and fulfilling their needs of basic amenities. A group which began as a group of 10 friends is today an organization with hundreds of volunteers. The organization has successfully led many projects like Food for Thought, Child Mentor Program, ASH, and few more. Namaste and very warm welcome to one and all present here. I am Urvashi Das, who has been associated with the Aashman Foundation for a few months only, and it gives me immense pleasure to be your host and facilitator for today's event. The topic of today's gathering is let's talk about autism. Autism is a developmental disorder of variable severity that is characterized by difficulty in social interaction and communication and by restricted or repetitive patterns of thought and behavior. And to enlighten us all with much more knowledge regarding this mental disorder, we today have Mrs. Mugdha Kalra, an Indian media professional, content strategist, chief content officer at Backstage, an autism activist, and co founder of the movement Not That Different. Ma'am has been in an amazing yet inspiring journey of spreading information and awareness regarding autism. Our cordial welcome to you, ma'am. Thank you. Thank you so much, Urvashi. A pleasure.
Ma'am, we are delighted and grateful for your presence in this event. And now I would request you to share your knowledge regarding to today's topic. Well, I wouldn't say it's my knowledge. I will say it's my lived experience. Because before I had my son, I had no idea what autism was. And I was all of, I had my son when I was 30 years old. तो इतने भी हम यंग नहीं थे कि हमको ऑटिज्म के बारे में या न्यूरो डाइवर्सिटी के बारे में पता ही नहीं होता. लेकिन Yes, ma'am. इंडिया में माहौल जो है, मैच्योरिटी इन सोसाइटी न्यूरो डाइवर्सिटी को लेकर ऐसी है कि हम जैसे लोग जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस में इंग्लिश मीडियम में पढ़े, बड़ी बड़ी सिटीज में जिन्होंने काम किया, मैं तो जर्नलिस्ट थी, सो यू नो, बट at 30 when I had my son, I had no idea what developmental delays are. And when at 34, which was my age when my son was 4 and he was diagnosed to be on the autism spectrum, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि autism spectrum disorder क्या होता है. Yes, ma'am. And to be really honest, you know, most parents do not really read a book which says what to expect when you're having a special child. You know, there is a very famous book that all pregnant couples they read, which is called What to Expect When You're Expecting. आप किसी भी पेरेंट से बात कर लो, उन्होंने ये किताब जरूर पढ़ी होगी. लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी पेरेंट जो है वो एक ऑटिज्म डायग्नोसिस के लिए तैयार नहीं होता है कि उनका बच्चा जो है वो सपोजिटली न्यूरोटिपिकल नहीं है, वो कुछ अलग है. तो मेरी जर्नी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में और मेरे बच्चे को समझने में एक लिव्ड एक्सपीरियंस की तरह ही है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जिसको ऑटिज्म से कुछ लेना देना नहीं होता है वो उसके बारे में पढ़ता ही नहीं है. So my personal story became my purpose, and all I can say is it has been a beautiful journey, and I did face a lot of hurdles in the beginning, क्योंकि एक पेरेंट के लिए बड़ा ही चैलेंज होता है कि उसको अगर बताया जाए कि भाई आपका बच्चा जो है वो अलग है और उसकी ज़रूरतें अलग हैं और शायद उसकी लाइफ भी अलग है. अगर आप उसको एक बार एक्सेप्ट कर लें तो फिर आपका बच्चा ही आपको इतनी खूबसूरत जिंदगी दिखाता है, क्योंकि वो अपनी स्पीड पर पढ़ता है और अपने तरीके से वो जिंदगी जीने की कोशिश करता है. That's wonderful. Ma'am, I have myself realized that how much knowledge we today consider mental health as. And I believe that's why it has led to so much anxiety, stress, and depression related disorders in today's time. बिल्कुल बिल्कुल. Ma'am, now with your permission, I would like to begin with the questioning session. Absolutely. I would request the audience that whatever questions you have to write in the comment box. So, ma'am, before the audience are commenting, I would like to begin with one of my questions I Absolutely. personally have. Ma'am, how can we help autistic people to cooperate with themselves, or how can we help in cooperating people? Because first of all, like, it's a taboo in India. If we feel that somebody has mental disorder, we instantly connect them. They might harm us, but I believe that they are rather more calming and honest and humble persons in nature than we are. So, ma'am, how can we help them in cooperation, and how can we help in minimizing this taboo, basically? Urvashi, I think inclusion starts at a very young age. And that was one of the cornerstones of the movement that I run, which is called Not That Different. Not That Different is a children-led movement, which basically talks about how to create a sense of empathy and acceptance in neurotypical children. Now, we have coined this, we work on this term neurodiversity, जिसमें एक न्यूरोटिपिकल है और एक न्यूरो एटिपिकल लोग हैं. नाउ न्यूरोडाइवर्सिटी को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब जो न्यूरोडाइवर्सिटी के नंबर्स दुनिया भर से हमारे पास जो आ रहे हैं वो 1 in 7 है. And also and neurodiversity contains a lot of things. So autism in itself is an autism spectrum disorder.
Yes, ma'am. इसमें आप जरूरी नहीं है कि अगर आप एक ऑटिस्टिक इंसान से मिले हैं तो आप दूसरे से मिलेंगे तो वो आपको और भी अलग लगेगा। तो दो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। न्यूरोडाइवर्सिटी में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम भी आता है, न्यूरोडाइवर्सिटी में एंजाइटी डिसऑर्डर भी आता है, डिसलेक्सिया आता है, डिसकैल्क्यूलिया आता है, डिसग्राफिया आता है। ये बहुत तरीके के डिसेज हैं जिसमें समझने की ये जरूरत होती है कि अगर बहुत अर्ली एज से टीचर्स अगर ये समझे, सबसे पहले तो घर से शुरुआत होती है। द इंक्लूजन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम होम। बहुत बार ये होता है कि फैमिलीज जो हैं वो ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, फिर वो उसके बारे में बात नहीं कर पाती हैं। Yes, फिर ma'am. उस बच्चे की नीड्स जो हैं वो अलग तरीके की होती हैं, उसको थेरेपी की जरूरत होती है। अगर वो नॉर्मल स्कूल में जा रहा है तो शायद वो वहां पर जल्दी से फिट नहीं हो, क्योंकि उसके पढ़ने की स्पीड अलग होती है। अब अगर आप अपने बच्चे को नहीं समझेंगे, उसको थेरेपीज नहीं देंगे, या आप उसको उसके स्पीड से उसके लेवल पर नहीं पढ़ाएंगे, तो मान लीजिए अगर डिसलेक्सिक बच्चा है और सबने तारे जमीन पर देखी है तो डिसलेक्सिया सभी लोग समझते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो है उसको समझने में थोड़ी सी परेशानी इसलिए होती है क्योंकि ये स्पेक्ट्रम है। तो इसमें एक और बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो कि सैवेंट सिंड्रोम कहलाता है, और दूसरी तरफ जो है ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑटिज्म की वजह से एक डिसेबिलिटी में होते हैं। You know, their brain functioning is at a level where they will need support all their lives. लेकिन एक बीच का जो ये स्पेक्ट्रम है उसमें हम और आप जैसे बहुत Yes, सारे लोग होते हैं जिन्हें कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है। लेकिन हाँ, ऐसे कई लोग होते हैं जिनको ऑटिज्म को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। ऑटिज्म बेसिकली इज अ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। मुझे एंजाइटी होती है लैंग्वेज का इस्तेमाल करने में। ये नहीं है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आई हैव द वोकैबुलरी, आई हैव द वर्ड्स। मेरा बेटा है जैसे, ही इज 12 years old, वो मेरी सारी yes, बातें ma'am. समझता है और वो कन्वे भी कर पाता है, लेकिन वो बात नहीं करता है। So he has words. Like for instance, if I tell him कि तुमको तुमको पास्ता खाना है कि तुमको खिचड़ी खानी है, तो वो बोलेगा कि मुझे पास्ता खाना है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि उसके पास लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उसके पास में या उसको अगर घूमने जाना है तो वो मुझसे कहेगा कि घूमने चलो। लेकिन अगर मैं उससे पूछूं कि आज माधव तुम्हारा दिन कैसा था, व्हाट डिड यू डू इन स्कूल, he will not want to engage, or he would not want to make eye contact. तो Okay. ये एक सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जिसमें लोगों को बातचीत करने में मुश्किल होती है। उनकी कुछ रेपिटेटिव उनकी मैनिफेस्टेशन होता है, जैसे या वो इस तरीके से स्टिमिंग करेंगे, या वो अपनी आंख के सामने ऐसे ऐसे करेंगे, या वो पेन से खेलते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को ऑटिज्म के बारे में पता होगा तो आपको ये पता होगा कि मेरे साथ में जो ये शख्स है, ये इंडिविजुअल है, हो सकता है ये जो है इसका ब्रेन डिफरेंटली फंक्शन करता है, और इस वजह से आई जस्ट नीड टू बी मोर इंक्लूसिव अबाउट हिम. So that's the reason why we say that inclusion first needs to start at home, then at schools, and of course with everybody who is around. You know, you as a friend can be an ally. You as somebody working in an organization can be an ally and help these kids and individuals when they grow up. Great, ma'am. Ma'am, Bikash Singh is asking that how this disorder affects the body or it's totally internal. Because you know, it is very interesting that you raised this question, because within the spectrum there are different ways in which autism presents itself. In some people it can just be a difference. Difference से मेरा मतलब है कि वो आपके काम करने का तरीका अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है, and it's only a behavioral difference. उसमें बॉडी पे कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है. किसी किसी उसमें ऑटिज्म में डिफिकल्टी होती है. आप जो काम फटाफट कर सकते हैं उसको इन्हें करने में थोड़ा और ज्यादा समय लगता है. आप जो चीज बहुत फटाफट क्लास में समझ सकते हैं उन्हें ये समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है. आप जो इंस्ट्रक्शंस फटाफट अपने दफ्तर में ले सकते हैं उन्हें ये चीज समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है. तो क्या हुआ, ये डिफरेंस हो गया. एक हुआ डिफरेंस, एक हुआ डिफिकल्टी.
लेकिन ऑटिज्म का मैनिफेस्टेशन जब आपकी बॉडी पर होता है तब हम इसको बोलते हैं प्रोफाउंड ऑटिज्म, जिसका मतलब है कि ये ऑटिज्म जो है ये आपके शरीर को अफेक्ट कर रहा है। इसमें सीजर्स हो सकते हैं, इसलिए कई लोगों को सीजर मेडिकेशन पे रखा जाता है। ये एपिलेप्सी से अलग होता है, लेकिन कई लोग जो हैं उनको सीजर्स कॉमन एज मैनिफेस्टेशन होता है ऑटिज्म में। इसके अलावा फिजिकली ये आपके गट को बहुत अफेक्ट करता है। कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हो सकते हैं पेट में। तभी हम बहुत सारे लोग जो हैं वो डाइट पे बहुत कंसंट्रेट करते हैं कि आप बच्चे को क्या खिला रहे हो क्या, बिकॉज ऑटिज्म डिजीज नहीं है, ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, तो इसीलिए इसका कोई इलाज नहीं है। But the way it affects the body is that you may have some gut issues, you may have constipation issues. In some cases, the manifestation is in seizures. लेकिन मेडिकेशन से बहुत फर्क पड़ता है। एंजाइटी और कई तरह की दूसरी एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो एज कोमॉर्बिडिटीज आती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप शुरुआत से ही इन बच्चों को जो है आप इनकी मेंटल हेल्थ का आप ख्याल रखें। But other than that, they function absolutely fine, and other than that, it doesn't take any toll on the body. They grow absolutely fine. Yeah, maybe sensory processing disorder की वजह से उनकी थोड़ी थोड़ी quirks होती हैं, जैसे मेरा बेटा अपने पंजों पर चलता है। So we have to be very careful कि उसकी posture पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा है। Yes, So those are the things that we keep in mind. Ma'am, the rap show is asking, what is the prognosis of children with autism? So it is an interesting, by prognosis, if you mean what life looks like of a child on the spectrum, एक बच्चा जिसका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में होना बहुत अर्ली डायग्नोस होता है, जैसे मेरे बेटे का 4 साल पर हुआ, और लोग होते हैं जिनके बच्चों का 1.5 साल 2 साल पर भी हो जाता है। जिस बच्चे को डायग्नोसिस जल्दी मिलता है और उनके पेरेंट्स अगर खुले दिमाग से थेरेपीज में बच्चे को ले जाना शुरू करते हैं तो उस बच्चे में बहुत फर्क होता है। लेकिन हाँ, द रैप शो, I can obviously say that they will never be like neurotypicals. They'll always be a little different, but they can go to live their lives. They can if they are taught to be independent, then they can live independent lives. They can work. उनकी जो पढ़ाई होती है हम उसको कस्टमाइज करवाते हैं। लाइक माधव वाज होम स्कूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन इंडिया में रह के मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि स्पेशल स्कूल्स में ही अगर बच्चे को डाला जाए तो उसको ज्यादा कंसंट्रेशन मिलता है, क्योंकि हमारे स्कूल्स जो है वो अभी इंक्लूजन के लिए तैयार नहीं है, उनकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो ये बच्चा जो है अगर इसको अपने तरीके से पढ़ाया जाए, अपनी स्पीड पे पढ़ाया जाए, उस पर बहुत ज्यादा न्यूरोटिपिकल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे जाएं, उसको बाद में उसके इंटरेस्ट की चीजें जो हैं वो सिखाई जाए, they can just about lead life as any ordinary person, and they go on to get married, they go on to have children, they go on to work, because again autism spectrum हर किसी में अलग अलग है। जहां पर ये केवल डिफिकल्टी और डिफरेंस वाली स्टेज में है, those people are they lead their lives as normal people lead. I mean, मेरे को ये शब्द normal पसंद नहीं है, लेकिन just for explanation sake I'm using it. Ma'am, Vikas Singh is asking again, what are the ways to recover from this disorder if it is found at later stage? Okay, so Vikas, recover नहीं manage बोलूंगी। सो रिकवरी तो इसमें हम केवल इसको मैनेज करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग हो तो और अच्छे से मैनेजमेंट हो जाता है। लेटर स्टेज पे इनफैक्ट इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि स्पेक्ट्रम के माइल्ड पोर्शन पर हैं, और शायद उन्हें इस बात का कभी अंदाजा ही नहीं हुआ था कि वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं। इनफैक्ट यहाँ बॉम्बे में एक काउंसलर हैं जो कि ऐसे लोगों की काउंसलिंग करती हैं, थेरेपी करती हैं, जो कि कपल काउंसलिंग के लिए आते हैं, और ये लोग काफी बड़े हैं पर लड़ झगड़ रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में, एंड देन दे कम एंड व्हेन द काउंसलर इज टॉकिंग टू देम, शी फाइंड्स आउट दैट वन ऑफ देम कुड बी एन ADHD और कुड बी ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, और जिसकी वजह से
उन्हें अपनी बातें एक दूसरे Convey अपने me. पार्टनर को कन्वे करने में मुश्किल होती है. एंड दैट्स व्हेन दे फिगर्ड आउट दैट परहैप्स दे वर मास्किंग ऑल देयर लाइफ. मास्किंग का मतलब है आप एक मास्क पहने हुए हैं जिसमें आप नॉर्मल होने की आप Acting लोगों में correct. फिट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप खुद अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं. आज की तारीख में विकास, देयर आर सेवरल online questionnaires that you can fill, and you can figure out for yourself if you are on the spectrum. एक बार आपको स्पेक्ट्रम का अंदाजा हो जाता है तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि आप कौन कौन सी चीजें बिहेवियरली सीख सकते हैं. जैसे अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, एबीए थेरेपी जो है वो एडल्ट्स के साथ भी इस्तेमाल की जाती है. थेरेपी की जरूरत पड़ती है टू अलाइन योर थॉट्स कि अच्छा मैंने ये समझ लिया है कि शायद मुझे शायद मैं स्पेक्ट्रम में हूँ, अब मैं इसको आगे कैसे ले जा सकता हूँ. इन लॉट ऑफ केसेस मेडिकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, बिकॉज undiagnosed autism spectrum at a later age can lead to anxiety disorders. तो आप ये सोचते होंगे कि मैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है या मैं लो फील कर रही हूँ या मुझे हर चीज में घबराहट होती है, बट these are all absolutely all right emotions to feel. Okay, ma'am. Ma'am, next question is by Rashmita Samantrai. She's asking, is autism hereditary or genetic, and what's the main cause behind it? रश्मिता, दिस इज अ पजल. ये अभी भी पजल है कि ये हेरिडिटरी है कि जेनेटिक है, लेकिन आई हैव सीन, मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो पेरेंट्स को देखा है और जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, जेनेटिक स्ट्रेन्स हैं, जेनेटिक स्ट्रेन्स होते हैं. हेरिडिटरी में ये कह सकते हैं कि जहां पर शायद एंजाइटी डिसऑर्डर रहा हो या डिप्रेशन रहा हो या सोशल कम्युनिकेशन चैलेंजेस रहे हों या फैमिली में डिप्रेशन की हिस्ट्री है, वहां पर भी देखा जाता है. जेनेटिक स्ट्रीम कुछ ना कुछ जरूर दिखती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर केस में दिखे. बट I have seen parents with 2 children with autism. Now, that only genetic fabric explains. So there is a lot of research happening, but we can't say for surely that it is only genes that way. Ma'am, Harsh Vitori is asking, can I wait to have my child tested for autism? I would say अगर आपको हर्ष रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, अगर आपका बच्चा, हर्ष, इफ यू कुड टाइप एंड टेल मी व्हाट इज योर चाइल्ड्स एज, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों में रेड फ्लैग्स बहुत जल्दी आ जाते हैं. आपको समझ आ जाएगा कि ये बच्चा जो है, इसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो हैं, स्पेशली लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के, वो कितने डिलेड हैं. लेकिन अगर मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपका बच्चा 1 से 4 साल के बीच में है, तो भाई कोविड की वजह से भी बहुत सारे लोगों को ये फॉल्स डायग्नोसिस मिल रहा है कि बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ऑर्गेनिकली बच्चे ग्रो करते हैं लोगों से मिलजुल कर, एंड यू नो व्हेन दे इंटरैक्ट विद अदर्स एंड ऑर्गेनिकली हाउ द ब्रेन डेवलप्स, during the time of COVID for 2-3 years, their brain was deprived of this juice. So a lot of kids are socially awkward at the moment. They have not picked up on cues from nature, and their language is not developed. So automatically parents start to feel, okay, is that a red flag? Should I take my child to a therapist? But we always say that, if the child is right at the moment showing you some signs, then आप उसको expose करो, लोगों से एक्सपोज करो, उसको बाहर लेके जाओ, एंड देन फिगर आउट कि उसका इंटरेक्शन लेवल जो है वो सुलझा है कि नहीं. लेकिन हाँ, अगर 5-10 रेड फ्लैग्स हैं, अगर आपको वो अपने बच्चे में दिख रहे हैं इस वक्त, then you must go to a therapist. Number one, if his developmental milestones of language are delayed, क्या वो अपनी एज के हिसाब से वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो अपनी एज के हिसाब से लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, डज ही रिस्पॉन्ड व्हेन हिज नेम इज कॉल्ड. अगर बच्चे का नाम लिया तो वो टर्न होके देखता है कि नहीं. उसके बाद में क्या वो अपने में ही खेलना पसंद करता है कि दूसरे लोगों से घुलना मिलना उसको अच्छा लगता है. अगर आप उसको प्ले स्कूल भेजते हो तो क्या वो अकेले अकेले रहता है, उसकी टीचर से बात करो कि ये बच्चा कितना बात करता है, कितना घुलता मिलता है.
Another thing is lining up of toys. You will always see that these children have a particular tendency of lining of toys, and they won't play with the toy the way it is designed to be played with. So those are a few red flags that you can be mindful of, and if you see them, yes, why not? Early detection, I always say, is the best thing. Ma'am, the rap show is asking, does Thimerosal cause autism? I would say ये मेरे से भी प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं ये पहली बार वर्ड सुन रही हूँ, तो रैप शो, आई डोंट हैव आंसर टू दिस क्वेश्चन, Yes, ma'am. if that I would. causes autism, but you have given me you know uh, a direction. मैं गूगल करूंगी इसको बाद में जाके कि ये Yes, ma'am. क्या चीज है. Ma'am, Vikas Singh is asking again, does isolation can cause this disorder? Because it's an interesting question. Isolation, हमने 2 साल में देखा है that in the COVID cycle, a very mixed picture is coming out, where children who were only confined with their parents for 2-3 लोगों की nuclear family में, जो कि 2 साल तक रहे बच्चे, तो isolation, yes, of course, because you're not exposed to the world. But to be honest, isolation internet की दुनिया में तो हो ही नहीं पाता है. The child has a mobile or a screen जिसमें वो pictures देख रहा है, and is seeing things. But yes, isolation is a big reason for I would say amplifying the disorder. कि इन बच्चों को अगर आप और भी अलग थलग रखोगे, ये अगर और ज्यादा अलग रहेंगे, तो ये कभी नहीं सीख पाएंगे कि बाहर की दुनिया के साथ में कैसे घुलते मिलते हैं. इनको बाय द वे कोई फर्क नहीं पड़ता आइसोलेशन से. यू कम टू माय हाउस एंड यू सी माय चाइल्ड, ही इज वेरी हैप्पी इन हिज कंपनी, but I want to take him out. I don't want to isolate him, so that he sees the world, and the world sees him. Yes, ma'am, another question by Bikash is, what is the probability of recovery from this disorder? Because there is no recovery. I would say it's only management. It is only management, and with early intervention, a lot of it depends upon where on the spectrum you are, right? Where on the spectrum. For instance, I was when Madhav was 4 years old, and all the children were starting to write. In Hindustan में तो हम और भी बहुत जल्दी बच्चों को लिखना सिखा देते हैं. They start, उनकी उंगलियां भी इतनी strong nahi hoti, and we give them a pen and pencil, and we say that you write. So at 4, I had thought that I don't know if my son will ever be able to write, because he wasn't writing at 4. At 5, he wasn't writing. At 6, he wasn't writing. So I kept thinking, maybe I don't know if he'll write ever. And at 7, he picked up writing. He started to write, he started to use. So I would say that there it takes time. So I wouldn't say recovery, but I say that you have to give time, you have to give therapy. To a large extent, the functionality of that individual and independent life skills, they can see a huge difference. So there is no recovery. If you have autism, you will have autism all your life, but the management becomes easy. Okay. Ma'am, the rap show is asking, does nutritional therapy benefits for autism? Yes. So nutritional therapy help in a way, like in my case, even though so they speak about gluten-free, casein-free diet, GFCF diet, जिसमें हम बच्चों को gluten नहीं देते हैं. अब ये बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं ये कहते हैं, लेकिन GFCF डाइट किस तरीके से आपको हेल्प करती है, there is no scientific evidence of it. Yeah, but one thing that we understood was that if he was having little wheat or controlled wheat, yeah, then he was having less constipation issues. And when he was having less constipation issues, he was sleeping better, or he was feeling better. I mean, it's almost like if you're constipated the whole time, हम लोग नहीं काम कर पाते, right? पेट में अकड़न हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो हम उन सारी चीजों को डाइट के थ्रू अलग करके चलते हैं, जो कि आपकी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट कर. एंड एट द एंड ऑफ द डे,
You are what you eat. Yes, It ma'am. stands for neurotypicals and it stands for neurodiverse. So nutrition plays a huge role. In fact, हम उसको sugar control देते हैं. We don't give him a lot of sugar. Um, Aerated drinks can cause a problem. If you are eating, if you're not on a balanced diet, if you are eating, so for instance, if you are eating a lot of junk, automatically you're putting on weight. And when you're putting Yes. on weight, doing any kind of hardcore exercising becomes difficult, right? And our neurologist has told us that for Madhav's ADHD and for Madhav's energy to be used, he needs to play sports every single day. So then we have to control the diet. So we have to ensure that there is fitness in the routine. बाहर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बायोमेडिसिन पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें आपको बहुत स्ट्रिक्टली जो है आपको ग्रीन स्मूदीज, किसी खास प्लांट का जूस और ये तमाम चीजें आप बच्चे को देते हैं, जिनका आयुर्वेद है, जिनकी यूटिलिटी बहुत है, लेकिन उनको आप नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में कितना फॉलो कर पाते हैं वो चैलेंजिंग हो जाता है. इसीलिए वी डू टेक केयर ऑफ न्यूट्रिशन, but nutrition alone can change the prognosis, perhaps not. Okay. Ma'am, PS is asking, is autism becoming too common nowadays? And does it increase in offsprings due to our modern life? Unfortunately, PS, the numbers are high. So we are looking at one in 60 in America and 1 in 40 in UK. इंडिया में हमारे पास डेटा डेफिसिट है, तो हमें ये पता ही अंदाजा ही नहीं है कि इंडिया में कितने लोग हैं. अनअकाउंटेड नंबर 1 in 80 का है. और अगर आप अभी किसी टीचर से बात करेंगे या इफ यू गो एंड चैट विद समबडी इन योर फैमिली एंड यू विल से, वेल, डू यू थिंक यू नो समबडी ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, chances are you will find, which means that the cases are not reported. There hasn't been a census done because till 2016 autism spectrum was not even part of disability bill. जो हमारा disability वो है उसमें disability included ही नहीं थी as autism spectrum. So कभी इसकी गिनती नहीं हुई है कि कितने लोग हैं. But yes, it is on the rise, and it is also perhaps कि आज diagnosis और awareness भी पहले की तुलना में ज्यादा है, तो हमें लग रहा है कि ज्यादा cases हो रहे हैं. But yes, definitely the numbers are rising. Ma'am, Harsh Vitori is asking, what are some resources for learning more about autism? हर्ष, वैसे तो गूगल में बहुत ज्ञान है. If you want to find out more, Google is always there. But we work with this very lovely agency called Nai Disha. In fact, Nai Disha के पास में I will just tell you the details. नई दिशा के पास में हिंदी में, इंग्लिश में, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में काफी रिसर्च्ड मटेरियल है. नई NAYI/DISHA.org. इनकी फ्री हेल्पलाइन है. I can give you the number. It's 844-844-8996. ये 6 लैंग्वेजेस में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं इनके. आप इनको लिख सकते हैं. ये फ्यूचर रेडीनेस प्रोग्राम करते हैं, जिसमें मान लीजिए अगर आपके बच्चे को अभी डायग्नोसिस के बारे में पता चला है, तो आप एज अ पेरेंट कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं. एंड वी वर्क वेरी क्लोजली, नॉट दैट डिफरेंट, वर्क्स वेरी क्लोजली विद नई दिशा. सो आई वुड रेकमेंड दैट if you want authentic information and not information that can overwhelm you, then please go to Nai Disha and have a look at their resources. थोड़ा बहुत समझने के लिए और मैनेज करने के लिए तो मैं अपने वीडियोस करती हूँ. मेरा पेज है Autism Tales at Mugdha, पर उसमें बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस होती है. तो बहुत साइंटिफिक एडवाइस के लिए you can follow them. प्रैक्टिकल के लिए we are here always to help. Ma'am, Vikas Singh is asking. Yes, ma'am. Ma'am, Vikas Singh is asking, what are the screening tools for autism? स्क्रीनिंग टूल्स हर थेरेपिस्ट के अलग अलग हैं. पहले IQ टेस्ट की जाती थी उन बच्चों की जो कि वर्बल होते थे. अब जैसे मेरा बेटा सेमी वर्बल है
और कई नॉन वर्बल बच्चे भी होते हैं। लेकिन जो वर्बल बच्चे हैं उनमें उनके ऑटिज्म को कैसे ट्रेस किया जाए, उस टाइम पे आईक्यू टेस्टिंग होती थी और बहुत तरीके के लंबे और छोटे नाम वाले टेस्ट्स होते हैं जो कि थेरेपिस्ट्स करते हैं। बट एक चीज जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने समझा है कि इन सारे टेस्ट्स के जो स्क्रीनिंग टेस्ट्स हैं इनके यार्डस्टिक्स जो हैं वो बदल रहे हैं। कभी कुछ नया इंट्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक ऐसी चीज है जो कि बिहेवियरल है। इट्स कंप्लीटली अबाउट, if you know what autism is, you will meet a person and you will know that they are on the spectrum. I mean, I can say that now with experience of uh, being living the autism life. But otherwise, when you go to a therapist and assessment center or to a developmental pediatrician, दोनों में फर्क है। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से अपॉइंटमेंट लीजिए, पीडियाट्रिशियन से अपॉइंटमेंट लीजिए, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत ऐसे पीडियाट्रिशियंस हैं जो कि पूरी तरीके से इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को नहीं समझते हैं। सो व्हेन यू गो टू देम, either they will see the child and do an assessment based on their observation and taking mark on a spreadsheet। और ये by the way ये spreadsheets आपकी इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं। ऑटिज्म स्पीक यूके की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड उनकी वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है। यू कैन चेक इट फॉर योर सेल्फ, जहां जहां आपको लगता है कि अच्छा ये चीज मैच कर रही है, ये नहीं मैच कर रही है, फिर स्कोरिंग की जा सकती है। एंड देन इफ यू फील दैट नीड्स अ स्क्रीनिंग, then either go to an assessment center where you can see a child psychiatrist, child counselor, or you go to a hospital where you meet a developmental pediatrician. Ma'am, I believe I will take one last question. Ma'am, who is this? Okay. Ma'am, Vikas Singh is asking why these disorders are not accepted in India. I'm glad because you raised this question. हमें ना नॉर्मल से बहुत लगाव है। हम सोचते हैं कि ना जिंदगी एक ही तरीके के ढर्रे से जो चल रही है, हमने जो डिसाइड कर लिया है कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही बच्चा होना चाहिए हमारा, या ऐसी ही नौकरियां में मिलनी चाहिए। वी हैव गॉटन यूज्ड टू दिस, we have gotten trapped in this definition of supposedly normal and supposedly typical, and anything away from it is very difficult to understand for people. So if you are if you don't understand that brains are functioning differently, then you will not be able to appreciate and accept other people. आपको लगेगा कि मेरा ब्रेन ऐसे चलता है तो उसका भी ब्रेन ऐसे ही चलना चाहिए। And that is the reason why parents को हिचकिचाहट होती है कि लोग क्या कहेंगे। फैमिलीज को हिचकिचाहट होती है कि मैं बच्चे को बाहर लेके जाऊंगी तो व्हाट विल पीपल सी। नाउ लुक एट द इंडिगो केस दैट हैपेंड रिसेंटली, राइट? Yes, वेयर अ ma'am. चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड द एयरक्राफ्ट विद हिज फैमिली। नाउ द चाइल्ड हैड सेंसरी इश्यूज, वो रेपिटेटिव बिहेवियर कर रहा था। लेकिन अगर वो एयरलाइन वाले नहीं समझे उस बिहेवियर को, क्योंकि वो चाहते थे कि आप वो बार बार कहते रहे आप इसको नॉर्मल करो, आप इसको नॉर्मल करो, right? Yes. So our definition is so skewed of what is normal and what is typical कि आप ये सोचते हैं कि इस बॉक्स के आगे जो जिंदगी है या इस सर्कल के बाहर जो जिंदगी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। And I think that narrative needs to change. And people should not really hide their children and let them grow and be the best versions of themselves. Ma'am, this is the final question. It's by Aarti Pandey. What is the minimum age for starting therapy if you are seeing sign as early as at 10 months? Aarti, I would say 10 months. You will find intervention with the pediatricians, and you will find a lot of मैंने चीज नोटिस की है कि जितना आपको आपके पेरेंट सपोर्ट ग्रुप से हेल्प मिलती है, आपको उतनी हेल्प जो है शायद थेरेपी सेंटर से भी ना मिले, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। इट इज नॉट अ डिजीज दैट इट कैन बी फिक्स्ड बाय मेडिसिन और अ ट्रीटमेंट। So you start at home, and when you meet people, when you join support groups and you ask them, I have a 10-month-old, what can I do at home? You will get a home program,
And there'll be a lot of parents who will tell you that, ये आप ये चीज आप घर पे कर सकते हो. So early intervention is very, very important. And if the child is diagnosed at 10 months, then your developmental pediatrician will also have a plan for how to take it forward. So early intervention is very, very important. There are so many questions to cover, ma'am. I can give you another 10 minutes if you want, and if everybody wants to. Okay, ma'am. Ma'am, David is asking, how can I find out what caused my child's autism? अरे बहुत कठिन सवाल है ये, डेविड. I keep wondering. you know my family says that I started talking at 1.5, and my husband started singing at 1. So I don't know what caused autism in my child, and why does he not speak. But it's very difficult, to be honest. And a lot of times, I have gone through that cycle where we as moms feel that, did I do something wrong during my pregnancy? Did I overexert myself? And and mothers guilt jo hai wo bahut real hai. And I always tell this to parents, especially moms, that don't blame yourself, because it's got nothing to do with you. Having said that, a lot of people go through, David, genetic testing just to be able to figure out just to be able to figure out कि कहीं genetic इसका कोई disposition तो नहीं है, ताकि आगे अगर वो दूसरा बच्चा करना चाहते हैं तो उसमें भी क्या कितने chances हैं कि वो बच्चा भी autistic होगा. So there is genetic work happening that I'm aware of. But other than that, very, very tough to figure out what may have caused autism in your child. Ma'am, I have to say today's session was an eye-opener. It was such an informative session, and I believe that whoever was watching today got lot more aware and lot more conscious about their surroundings, and they would realize that yes, this child might be having an issue, and we have to support them, we have to help them. Thank you. Absolutely. Thank you so I much. just want to make an appeal. We have a comic book called Not That Different, which tries to explain children and in a very simple way what is autism. And please spread the word about this. And if you know of parents who need help, connect them on my page. I'll be more than happy to help them, because our work is in autism awareness. So as many allies we can find, like all of you who spoke to me today, the wonderful audience, the rap show, please. David, Bikash, Mamta, Piasoni, Naina, and I mean, so many of you asked me such brilliant questions. Neha, Harkaran, Bikash, I mean, Harsh, so I want you guys to be our allies. अगर आप autism को थोड़ा सा भी समझें और दूसरों को बता सकें that this is what difference in brain manifest as, and that you can be allies and buddies and friends, it will be a great, great, great service to us. Yes, ma'am. Ma'am, it would surely be a word spread. And thank you so much, Mugdha ma'am, for providing us with your valuable time. And I would like to end the event with a short note. बेसहारा औरतों का आसरा, पतिव्रता स्त्रियों को ताकत देना, हर दुख भरे अंधियारे घर में रोशनी पहुंचाना, हर मुश्किल में घिरे बच्चे को सहारा देना, यही है आसमान फाउंडेशन का कर्तव्य. Thank you so much. Thank you everyone for joining. Thank you, And ma'am. Vishnu, just a small request. If ever you want me to come and speak to the women who are, who are actually at the grassroots level, and उनको अगर अपने बच्चों से related कोई issue है, तो वो बिल्कुल हमसे बात कर सकते हैं. I look forward to, because we are still the privileged parents. I would say that, we are still ones who have the privilege, but, I would love to be part of a larger audience where we can help them. Ma'am, Aashman Foundation has always worked for a better cause, and we would love to contribute with you, and we would love to have your help for the betterment and the upliftment of the society. Thank you so much. Urvashi. Thank you so much.
Thank you.